Welcome back, students of class 10. So today we are going to look at the second part of the central nervous system, that is the spinal cord. The central nervous system is composed of two parts. First part is the brain, which we have discussed in previous class, and today we are going to discuss the spinal cord. The spinal cord is the nervous structure that runs through the back of our body. It is located inside the vertebral column, while vertebral column is the outer bony covering that protects the spinal cord. दोनों चीज का डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए. वर्टिब्रल कॉलम है एक हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर जो उसके अंदर वाला स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. The spinal cord is made up of nervous tissue, while the vertebral column is made up of bony tissue. Okay, so there is clear difference between the vertebral column and the spinal cord. जो हमारे पीठ के पीठ से नीचे जा रहा है वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम. उसके अंदर रहता है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर वाला जो नर्वस टिश्यू है उसको कहा जाता है. ओके, now the spinal cord's most important function is that it controls all and coordinates all the movements of our body. All the nerves of our body arise from the spinal cord and also return to the spinal cord. जितने भी बॉडी में हम लोग का नर्व है ना, जो हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ऑल ऑफ दैट अराइजेस फ्रॉम द नर्व आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड अगेन कम्स बैक टू द स्पाइनल कॉर्ड. So if you take a cross section of that spinal cord, अगर आप spinal cord को ऐसे काटेंगे तो आप इसमें दो तरह का टिश्यू देख सकते हैं. You can see two types of tissues. Now remember, in case of brain, the outside covering was gray, right? The outside layer was gray. In the spinal cord, this is totally reverse. This is totally ulta. इन द स्पाइनल कॉर्ड द सेंट्रल पार्ट, अगर आप उसको ऐसे काटे हो तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है, दैट सेंट्रल पार्ट विल बी ग्रे कलर, वाइल द आउटर एरिया, जो आउटसाइड एरिया रहेगा, दैट विल बी व्हाइट कलर. सो द सेंट्रल ग्रे कलर्ड मटेरियल इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, वाइल द आउटसाइड व्हाइट कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर. The white matter receives and generates signals, while the gray matter is involved in processing the signal and carrying it to the brain. जो बाहर वाला white matter है वो either सिग्नल को रिसीव करता है या सिग्नल को भेजता है, और जो इंटीरियर ग्रे मैटर है वो सिग्नल को लेके ब्रेन तक कैरी करता है या फिर प्रोसेसिंग का काम में लगता है. ओके, तो देयर आर दीज टू पार्ट्स क्लियरली इन द स्पाइनल कॉर्ड. Now, if we after cutting the doing the transverse section, if you look at the top part, उसका भी अगर आप top part या जिसको हम लोग कहते हैं dorsal part को अगर आप देखेंगे तो the dorsal part receives the signals from the sensory neurons. जो sensory neurons के बारे में हम लोग पहले बात किए थे, वो सेंसरी न्यूरॉन का जो नर्व्स है वो आके डॉर्सली एंटर करते हैं, एंड वेंट्रली जो भी रिस्पॉन्स देने वाला जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस को लेके आता है, एंड मोटर न्यूरॉन्स जो काम करने के लिए जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को कैरी करता है. तो स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल पार्ट में सेंसरी न्यूरॉन्स आके एंटर करते हैं और डॉर्सल पार्ट में आके सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर करते हैं, और वेंट्रल पार्ट से मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं. द मोटर न्यूरॉन्स दैट आर एसेंशियली कैरिंग द इफेक्टर सिग्नल्स आर दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट. वो स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल पार्ट से निकल जाता है. Okay, you can see this in the image that is given in your classroom book, that how it is arranged. Okay, so all the nerves in our body, that body का जितना भी nerves है except for the major sensory nerves जैसे olfactory,
ऑप्टिक, ये सब नर्व छोड़ के ऑडिटरी, ये जो 3 सेंसरी नर्व है इसको, और कुछ कुछ टेस्ट का भी कुछ नर्व है, इसको छोड़ के मैक्सिमम ऑफ द नर्व्स arise from the spinal cord. There are actually 31 pairs of nerves that arise from the spinal cord. They are divisible into, first there are eight nerves that rise from the top part of the spinal cord. Then there is 12 thoracic part means जो पीठ के पीछे वाला जो हड्डी है उसको कहा जाता है थोरासिक पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. वहां से 12 पेयर नर्व्स निकलता है, उसके बाद और 5 पेयर, फिर और 5 पेयर, और लास्ट में 1 पेयर नर्व्स निकलता है. ऑल these parts have different names, and if you look at them, that by all these nerves coming together, our body does its function. So all these nerves generate from the spinal cord and they run through the back of our body, and they are released from the back of the body, and they also come back to the back of the body inside the spinal cord. So by this, the spinal cord plays a major role in coordinating movement and in signal transfer in human bodies. Okay? तो ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान से पढ़िए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क.